हेलो आर्टिस्ट, वेलकम टू आर्ट विद फनिक्स। तो आज की वीडियो बहुत क्यूट होने वाली है। टुडे आई एम गोना मेक अ क्यूट बेबी जिराफ। सो फॉर दैट आई एम टेकिंग एन A4 साइज कैनवस। अब मैं ये अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लूँगी इनटू माय प्रोक्रिएट एंड नाउ आई एम जस्ट गोना लोअर द ओपेसिटी ऑफ दिस लेयर सो दैट आई कैन ट्रेस इट ईजिली। अब मैं यहाँ पे ब्राउन कलर सिलेक्ट कर रही हूँ एंड अपना मोनोलाइन ब्रश सिलेक्ट कर लूँगी। उसकी स्टेबलाइजेशन सेटिंग्स में जाके बढ़ा लूँगी सो दैट आई गेट स्मूथ लाइन। And once that is done, I'm gonna start just tracing this cute baby giraffe. थोड़ा सा edit करके I'll just edit the lines and I'll just start tracing it out. अब guys, this process is very entertaining. आप इसको आराम से बैठ के ट्रेस कर सकते हैं। Now as you all know, मैं अपना प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ so that आप लोग बोर ना हो। Now as you can see, once it's all nice and traced, you can now delete that layer. And अब आप अपनी लेयर पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। So for that I'm using a brown color as you can see. अब मैं यहाँ पे लेयर की ओपेसिटी को 50% कर लूँगी एंड उसके नीचे एक लेयर लूँगी जिस पर मैं कलर करना स्टार्ट करूँगी। आउटलाइन करके I'll just fill the color inside and I'll just keep doing this. Now once the face is done, I'll do the same thing on the body as well. After this is done, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और darker brown color select कर रही हूँ, more like a chocolate brown, and I'm just gonna select these layers and just color them out. Now once that is done, इसके नीचे एक और layer ले ली है और अब मैं इसकी body को बनाना start कर रही हूँ using this beautiful yellow shade. अब इसको आउटलाइन करके I'll just fill the color inside and I'll just do the same thing on the body as well. Once that is done, I'll alpha lock this layer और अब मैं इस पे थोड़ी हाईलाइट करना स्टार्ट करूँगी using soft airbrush. Now as you all can see, I'm using a clipping mask on top of this layer और उसको मैं multiply कर लूँगी and this way I'm getting a beautiful shade design over here using the same tone of yellow. अब आप देख सकते हैं कैसे मैं one by one उसका आउटलाइन करके कलर सिलेक्ट कर रही हूँ और फिल कर दे रही हूँ। Same thing I'll do with the facial expressions, means the eyes and all. Now I'll draw these voluptuous eyelashes as well. And because I'm drawing a beautiful shiny giraffe, so over here I'm gonna make some white dots. So now as you can see, I'm selecting a baby pink color और अब मैं उसकी blush बनाऊंगी. So for that I'm using soft airbrush. Cheeks पे भी थोड़ी highlight कर लूंगी using these white dots. Now once this is done, as you can see, I'm selecting an orange color over here. I'm just gonna fill this layer. अब लेयर को हाईलाइट कर लूंगी यूजिंग सॉफ्ट ब्रश। Now I'm gonna start coloring the sunflower. उसके लिए I'm just gonna outline it and fill the colors.
अब सनफ्लावर को भी थोड़ी सी हाईलाइट कर लूंगी। Now once all this is done, I'll just color the interior part of the sunflower. And then I'll highlight that as well. Once that is done, अब green color से मैं सारी leaves बना लूँगी। So आप देख सकते हो कैसे मैं ग्रीन कलर से लीफ बना रही हूँ एंड देन आई एम जस्ट इरेजिंग द एक्सेस पार्ट, और इसी तरह से सारी लीव्स मैं रेडी कर लूँगी। अब सारी लीव्स बन जाने के बाद सनफ्लावर्स पे भी थोड़ी सी हाईलाइट ऐड कर लूँगी एंड दिस इज माय कंप्लीटेड पेंटिंग।